Let's do this question today. Adal and Cikta. We should assume that today's date is 1st of April 25. Okay, cool. Calculate with the supporting calculations which of the two potential gifts from Adal and Cikta will produce greater net annual income tax saving for the couple. Okay, let's try. Adal and Cikta are not married but have lived together for many years. So they are civil partners, are both tax resident and domiciled in the UK. Nice. Adal will have total income and tax rate 25-26 prior to making the gift as follows: trading income, rental income from UK, investment property, dividend income from Bovak Limited, and dividend income from other UK companies. Okay. Fine. So what? This is just dividend income, right? देखते हैं Bovak Limited पे तो क्या है वो देखते हैं. Add. Okay, it's like a subsidiary. Okay, fine. Hmm. Will gift either his UK property to his entire shareholding limited to Cikta on 6th of April 2025, has made no lifetime gift to his daughter on 1st of July 2022, which resulted, sorry, has made one, no, nahi, has made one previous lifetime gift to his daughter, which resulted in a gross chargeable transfer of 1,08,000. Cikta will have employment income of 14,000 in tax rate of 25-26, which will be her only source of taxable income in the tax year. Will retire from the employment on 1st of March 2027. Will sell the asset received from Adal on 1st of March 2027 when it is anticipated to have increased in value. Wait a second. Wait a second. Western Y gift order only will be available. Okay, तो ये CGT purposes के लिए सारे questions नीचे है. Okay, okay, they are huge. खाली यही देखना है कि potential tax saving किससे सबसे ज्यादा होगा. I guess the question is quite straightforward. We can just go ahead and calculate. Wait, क्या गया? What spreadsheet? Yeah, of course spreadsheet. This is the worst spreadsheet. What do we call era of ACCA era? I would say. Current scenario. We can say the current scenario, which is देखो bold वगैरह भी नहीं हो रहा. Particulars. Let's just keep this control X. Oh come on. ये कौन है ये बंदा? आदल. NSI dividends total. Trading income, which is please tell. Okay. फिर मैं ये सब लिख देता हूँ. Rental income, dividend income from Bovec Limited, dividend income from other UK companies. I don't know why they have written it so much separately, but there must be some reason for it. Oh my God, it doesn't copy paste. Oh shit, मैं copy paste करके सोच रहा था कि कितना simple चीज है, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी copy paste हो जाएगा. Oh, it doesn't copy paste. Oh my God, this is going to be hell of a question, Nabi. Oh, please, God, just. Oh.
He's just fucking killing bombs. 55,000, 15,000, 12 और 18,000। हाँ ये 8,000। मैं 18 पढ़ रहा हूँ। ठीक है। पर्सनल अलाउंस 40, 3.75%। Total income tax, which is summation of this entire thing. सी कंट्रोल वी करके अनडिफाइंड क्यों आता है फिर? जब मैं कंट्रोल भी करूँ, यहाँ पे कुछ और है क्या भाई? ओके ये एक है कुछ तो पेस्ट का, रुक जाओ, लेट्स ट्राई दिस नाउ। अच्छा ओके, वेट 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 वेट, आई थिंक आई जस्ट गॉट इट। ठीक है, इसको किया। नो। ओके गॉट इट, नाइस। मिल गया भाई, कॉपी पेस्ट फाइनली मिल गया। एंड शो यार कितना फालतू कर दिया भाई, पहले के कितना सही था भाई, कंट्रोल सी कंट्रोल भी क्या क्या हुआ करता था भाई। कॉपी है। ये रीसेट है एक्चुअली। बट ये पेस्ट है देखो, ठीक है ना, तो ये कॉपी मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे जाके इट्स पेस्ट बेसिकली, तो ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे नाम मैं बस चेंज कर दूंगा, कौन है इसकी, विल ना? नहीं विल नहीं भाई, मेरी बीवी का नाम क्या है? व्हाट जस्ट हैपेंड? लाइक चिक्ता। ठीक है, ये है। Now I will just remove all of this. टोटल इनकम टैक्स है ना? टोटल इनकम टैक्स मुझे लगता है मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए। सीरियसली यू आर किडिंग मी राइट? नो वेज भाई, कैसा है ये चीज? छोड़ो भाई। टोटल इनकम टैक्स में तो फिर से लिख रहा हूँ, इनकम टैक्स कितना है दोनों का टोटल इनकम टैक्स, दिस प्लस दिस। ठीक है, हैव टू कीप पेशेंस। इनकम टैक्स नहीं, आदल्स इनकम टैक्स, दिस इज चिक्ताज इनकम टैक्स, ओके। चल ठीक है, इतना हो गया। अभी कुछ नहीं करना है। ऑल्टरनेटिव वन करके अभी अपन इस चीज को करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इफ क्या है ये, ऑल्टरनेटिव वन क्या बोलता है?
UK investment property. If UK investment property is transferred, if UK investment property is transferred, तो क्या होगा, इसको रेंटल इनकम नहीं जाएगा, लेकिन रेंटल इनकम इसको जरूर जाएगा। तो रेंटल इनकम इसको जो जाएगा वो होगा 15,000 का। नहीं नहीं, ये 14,000 का ही है, ये 15,000 का जाएगा। तो टोटल इनकम टैक्स देखो इधर कितना आ रहा है। अरे अरे, if entire shareholding is transferred, तो उसके बाद क्या होगा, अगर एंटायर शेयर होल्डिंग मैंने ट्रांसफर कर दी बवॉक लिमिटेड की, तो फिर क्या होगा, ये जो 12,000 है बेसिकली ये अभी नहीं मिलेगा, इधर डिविडेंड इनकम जाएगा। व्हाई एम आई इवन बॉदरिंग, वो होने नहीं वाला वैसे भी। शोध भाई, सा गंदा चीज भाई, इतना गंदा इन्होंने। भाई पहले ही सब सब सही था भाई, क्यों, आई डोंट नो व्हाई दे रियली वांटेड टू चेंज इट भाई ना। कितना है, 15,000। कैन आई एटलीस्ट जस्ट डू दिस, कॉपी पेस्ट, ठीक है। नाउ what all things that I do I don't know, मतलब don't want, this is one thing which I don't want, this is minus में I don't want 500, yeah I think this, I think no, this will be 8.75% now, इनकम टैक्स सेव्ड, ठीक है ना। तो अभी तो इस पे इनकम टैक्स कम जा रहा है, बट इसका बहुत ज्यादा टैक्स अभी भी आ रहा है, क्यों ऐसा, बट 8,000 के लिए क्या। ओके, बिकॉज आई थिंक मोर अमाउंट ऑफ रेंटल इनकम इज स्टिल रिमेनिंग, ओके। Thus we can see that more income tax is saved if the gift is transferred, that the that more income tax is saved if the rental property income is transferred to चिक्ता, ठीक है। बस इतना लिख के मैं अभी छोड़ रहा हूँ इस चीज को, कि बहुत ज्यादा टाइम मैंने फालतू में स्पेंड कर दिया इस पे, बहुत फालतू चीज थी, ठीक है ना। अभी आगे इनकम टैक्स सेविंग बता दूं क्या, इनकम टैक्स सेविंग ऑफ G28 ना, हाँ, इनकम टैक्स सेविंग ऑफ
G28 minus, oh no, takes place. Nice. अब आगे बी पार्ट. The, on the assumption that Adal gives his shares in Bevok Limited, explain why gift holder relief will be available for the purposes of capital gains tax. The gift holder the gift holder will be available because मैं अपने आप को ऐसा बीच में रख देता हूँ, मैं इसको ऐसे बाजू में रख देता हूँ एंड रिक्वायरमेंट. मुझे समझना एडल गिव शेयर्स इन बेवॉक लिमिटेड. ओके, ये अपने बेवॉक लिमिटेड के शेयर्स दे रहा है, ठीक है. ये डिविडेंड इनकम 15,000 नहीं था, डिविडेंड इनकम वाज 12,000. आई रोट इट रॉन्गली. देखो 12,000 का ही था इनकम, 12,000 इसलिए. टैक्स रेट अभी कितना आ रहा है? 19,256 इज द टोटल टैक्स. 19,299. ओके, सो दो दिस विल चेंज अगेन. इसलिए मैंने वो देखा, क्योंकि वरना फिर वो क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलते कि ऑन द अजम्पशन दैट बैवॉक लिमिटेड के शेयर्स हमने ट्रांसफर किए. ये देखो ये है. तो थ्री 3,044 का होता है इनकम टैक्स सेव्ड. it was 12,000. I wrote it 14,000 by mistake. 15,000 by mistake. ठीक है. अब आगे एक्सप्लेन व्हाई गिफ्ट होल्डर रिलीफ विल बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ सीजीटी. हाँ, ये assumption पे कि आदल सबसे पहली बात तो शेयर्स डू क्वालिफाई, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन से shares do qualify for the purpose of shares do qualify as a asset for gift holdover relief. The gift holdover relief is available if the claim is made if the claim is made by both the donor and the donee. Usually gift holdover reliefs are made at not at arms made are a not at arm's length transaction. Explain with supporting calculation the impact of making a gift holdover relief claim on the chargeable gains which will be realized by both Adal and okay. So firstly, the gift holdover relief is made for chargeable business assets, and the chargeable gains which will be realized by Adal being the donor
will not be taxed at all. The gains will be rolled over and thus will be deferred in a way that the cost of acquisition of Cikta will be reduced by the amount of gains rolled over. And so the base cost will be calculated through which gains would arise on which tax would be payable. Nice. Done. Nice. मैंने ऊपर से ये नहीं लिखा ना. These are not eligible at arm's length transactions. Are not at arm's length transaction. Usually, it has been seen the donee where the assets are chargeable business assets and as Bovak Limited is Adal's company, we can say that they are chargeable business assets. Adal acquired 10,000 shares at 12%. वो सब ठीक है. तो ये है कंट्रोल. ये तो ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन. एक मिनट. हाँ. स्टेप वन क्या हो गया. सेल प्रोसीड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, गेन्स, गिफ्ट और रिलीफ. अभी गिफ्ट होल्ड ओवर रिलीफ. चिकता है एम्प्लॉयमेंट इनकम वो सब तो ठीक है. अरे क्या है भाई ये देखो. हाँ. Bevok Limited is a UK resident quoted trading company. Owns assets which have a total value of 4.5 on 6th of April 25. These assets comprise of trading assets valued at 4.1, of which 3.8 represent chargeable assets for CGT purposes, and shares in the quoted company valued at 0.4 held as long term. So you see, here we can see that Bovec Limited held here we can see that Bovec Limited here we can see that Bovec Limited held shares
and so they were not, and then so they were not qualifying business, and thus they were not chargeable business assets as not chargeable business assets, as they were assets used for the investment purposes. The fact that the only 3.8 million assets were eligible for the capital gains should be taken chargeable gains, sorry, for the chargeable gains should be taken into consideration. So thus a ratio will be calculated. Chargeable business assets, chargeable assets. तो अभी वो रेशियो क्या है? देखो, ट्रेडिंग एसेट्स 4.1 के हैं और 3.8 रिमेन चार्जेबल एसेट्स फॉर सीडी पर्पसेस। तो 3.8 मैं ऊपर लूंगा चार्जेबल बिजनेस एसेट्स, नीचे मैं 4.1 प्लस 0.4 माइनस 0.3, 0.03 को क्या मैंने 0.3 है वो सिर्फ। सो रेशियो इज दिस डिवाइड बाय दिस, तो 0.948 का रेशियो तो है। सो thus now the gift hold over relief will be eligible in the same proportion। बट मैं बताइए क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने ऊपर 3.8 लिया बिकॉज चार्जेबल एसेट्स फॉर सीजीडी पर्पसेस। मतलब बेसिकली पता है ये लोग नीचे क्या बोलना चाहते हैं, नीचे बोलना चाहते हैं कि ये जो है ना चार्जेबल एसेट्स 3.8 ही रिप्रेजेंट करता है और 4.1 नहीं रिप्रेजेंट करता। बेसिकली 0.3 मिलियन एसेट्स जो है ना वो सारे या तो मतलब मूवेबल वो चैटल्स है या फिर 6,000 के नीचे वाले वैल्यू के हैं, इसलिए वो 0.3 नहीं आ रहे, लेकिन आता है 3.8 ऊपर। ऊपर का वैल्यू बिल्कुल सही है, न्यूमरेटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिनोमिनेटर के बारे में मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। मैंने डिनोमिनेटर में एज गुड एज क्या किया है, मैंने वैसे मूवेबल चैटल्स को लिया ही नहीं है, लेकिन नीचे बताए क्या आते हैं, नीचे आते हैं चार्जेबल एसेट्स। नीचे हमें रिप्रेजेंट करना होता है चार्जेबल एसेट्स को, ऊपर हमें रिप्रेजेंट करना होता है चार्जेबल बिजनेस एसेट्स को। बिजनेस एसेट्स जो है दे दो और 3.8, ठीक है। चार्जेबल बिजनेस एसेट्स नीचे नीचे आते हैं चार्जेबल एसेट्स, सिर्फ चार्जेबल एसेट्स, अब उसमें से बाकी के 0.3 चार्जेबल ही नहीं है, इसलिए मैंने वो कंसिडर ही नहीं किए। अगर मैं गलती से भी करके चलता हूँ 4.5, तो मेरे को क्या आता है, मेरे को रेश तो मेरे को काफी अच्छा फिगर आता है। देखो मुझे यहाँ पे 5,200 और ऐसा 2,800 ऐसा करके फिगर आता है, ठीक है ना। बट आई फील यहाँ पे 4.2 ही आना चाहिए यार। बट नाउ एज द रेशियो हैज come as the but now as not all the assets are chargeable business assets, there will be some gains that have to be taxed on Adal as well।
फिर तुझे मुझे टैक्स तो नहीं मांगना है ना, मुझे टैक्स भी मांगा है। ठीक है भाई, उतना नहीं है। डाउन टू बेस कॉस्ट फॉर चिक्ता, which is cost of acquisition less gift holdover relief, less gift holdover relief base cost. If I just change it to 4.0 तो ये सारे फिगर्स एकदम अच्छे दिखेंगे, बट आई डोंट थिंक ये ऐसा होगा, क्योंकि सी मैं एकदम मतलब वो लॉजिक से सोच रहा हूँ। मुझे अभी वो फॉर्मूला में नीचे क्या था ऊपर क्या था याद नहीं है, लेकिन मैं एकदम लॉजिक से सोच रहा हूँ कि अगर वो जो तुम्हारे एसेट्स है चैटर्स जो तुम बोल रहे हो कि वो अगर चार्जेबल ही नहीं है, ठीक है, इफ दे आर नॉट इवन ब्लडी चार्जेबल, तो कुछ आएगा ही नहीं ना यार। तुम्हें समझ में क्या देखो, रिप्रेजेंट चार्जेबल एसेट्स फॉर सीटी पर्पसेस, इसका मतलब है कि 0.3 चार्जेबल एसेट्स नहीं रिप्रेजेंट करता, तो मैं नहीं ही ले रहा हूँ उस चीज को। आई डोंट नो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, बस जस्टिफाई करना चाहता हूँ अपने अपने थॉट प्रोसेस को कैसे भी करके। ठीक है, ये हो गया ये। अभी अभी लास्ट आता है 9 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन अवेलेबिलिटी ऑफ बीपीआर इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट ऑफ शेयर्स इन बोवैक लिमिटेड। ओके, मैं भी इसको इधर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सी पार्ट को। आई एम डन विद द स्प्रेडशीट, आई जस्ट डोंट वांट टू लुक एट माय मेस दैट आई क्रिएटेड। सी पार्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ property for gift depends upon what type of company is the shit. Company is Bovac Limited. We can see that Bovac Limited is a UK resident unquoted trading company, quoted trading company, and so the percentage of holding in an unquoted trading company does not matter. Trading company does not come into play. Thus, BPR will be available if claim is made. Given the fact that upon the end of 7 years and upon the end of 7 years or death, on the death of upon the death of Adal, if happens within 7 years, the donee still has the gift. Yeah, in 7 years, the donee still holds the assets, the shares actually, the shares. Otherwise, BPR will be withdrawn.
ठीक है, ये मैंने इतना बोल दिया। तो ये अपन वो लाइफ टाइम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक circumstances in which maximum inheritance tax liability would arise in respect of the gift and calculate the amount of the liability. Oh my god, ये क्या है भाई? Yes, explain the specific circumstances maximum inheritance tax liability would arise in respect of the what? Why has this started to play games with me again? In respect of the gift are if the if the gift if the gift is given during the lifetime of the individual and no nil rate band is available, if the death takes place within 3 years after making the gift, as there will be no nil rate band, and also as there will be no nil rate band, and also 40% that tax would be charged and no taper relief would be available. It has usually been seen that higher taxes are paid during the chargeable estate calculations of an individual. इसमें और क्या बोलूं मैं? जो यही तो होता है। दिस गिफ्ट, अच्छा, ऑफ दिस गिफ्ट, ओ माय गॉड। But here we can see that nil rate band is available, and so Adal only has to take care of the fact that if he makes a lifetime gift, that he survives as long as possible. If Adal survives more than at least 7 years, लिख देना ना, at least 7 years, then tax would be entire gift would be uh, exempt from IHT purposes, from ST
purposes. ऐसा आदल की डेथ नहीं दी है ना मैंने। आदल की डेथ दे देते। ओ दी है, ओ दी है। दी है। Adal is dying. In the current scenario, it has been given that an assumption has been made about Adal dies before 32. Thus, there are various tax years involved for which individual calculations can be made. But if he dies आफ्टर बट इफ ही डाइज, अभी मैं वो टेबल वेबल ले लेता हूँ ना, फिर मैं जो ये पूरा ही फिर अभी छाप देते हैं भाई। क्या बोलते हो, टैपर रिलीफ, यही मेरा पूरा प्लान था ना। बट इफ ही डाइज देन 20% टैपर रिलीफ इज अवेलेबल if he dies more than 4 but less than 5 years, then 40% taper relief is available, and so on. The increase in 1 year increases 20% of the, wait, 200 लिख दिया मैंने, 20% of the relief. Individual, as in those scenarios, no taper relief is available. C का second part, higher taxes will be payable if Adal dies before, एक मिनट, वो कब दे रहा है, गिफ्ट इज बाय यूके शेयर होल्डिंग बिफोर 06/04/2028 एस। अरे भाई, अरे मादर चोत भाई, मादर चोत भाई, कसम से भाई इतना फालतू हो गया ना ये। एस मैं पूरा जोन में होता कि अच्छा भाई अभी ये करना ही चाहिए, वह जो अचानक से बीच में कुछ। एज on as if he dies before this date, then he has then the nil rate band on the daughter's
gift transfer has also has also not been revived, so lesser nil rate band will be available. Lifetime particulars PT ट्रांसफर वैल्यू कितना है भाई ट्रांसफर वैल्यू लेस ए ए of the current year A of the previous year 3,000 gross chargeable transfer nil rate band no nil rate band is available for PET upon the lifetime of an individual as no tax is paid. Taxable amount 0, IHT payable 0, gross chargeable amount carried forward. ठीक है अभी वो कितनी है इतनी ही है नील रेट बैंड अवेलेबल नील रेट बैंड अभी वो कितना होता है ध्यान देना 3,25,000 डॉटर ट्रांसफर वैल्यू भाई आराम से जाएंगे ठीक है आराम से जाएंगे अपन भाई मैंने 1 घंटे से ज्यादा लगा दिया भाई इस क्वेश्चन के लिए इसमें मेरे को ज्यादा ऐसा ही हो रहा है कि भाई क्या कर दिया भाई मैंने भाई उसका ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर इतने का है भाई ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर का ट्रांसफर वैल्यू हाँ चल ठीक है मुझे लगता है यही होगा 1,08,000 तो नील रेट बैंड अवेलेबल मुझे 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 पहले लगा था कि मुझे 2 लाख माइनस करने हैं सॉरी वो 3-3 हजार माइनस करने को शायद वैसा नहीं करना है ठीक है ना तो इतना मेरे को पूछेंगे भी नहीं मतलब सब मोस्टली अभी मेरे को क्या करना है ध्यान भाई एकदम मेरे को एकदम ऐसे बस इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल ऐसे इसको कॉपी इसको इधर पेस्ट भाई बस परफेक्ट डेथ अभी इस बंदे की हो गई डेथ डेथ ऑन 06/04/2025 ठीक है ना अभी डेथ हो गई तो हम लोग क्या करेंगे बुरा तो लगा लेकिन ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट ब्रॉड कर ये प्लीज हो जा नहीं हुआ ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट क्या है ये ब्रॉड फॉरवर्ड यही वैल्यू आएगा लेस नील रेट बैंड पेड ऑन
मेरे को बस 06, क्योंकि 6 महीना आगे जाए ना। Calculation if that takes place on 06/04/2028। अभी क्या करूं मैं अभी? क्या करना है? अभी ऑन द अजम्पशन दैट डेट टेक्स प्लेस, ये सब तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी कॉपी पेस्ट करूँ, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट किया क्योंकि देखो 2 मिनट का ही काम है ना। कॉपी, इधर आऊंगा, पेस्ट कर दूंगा। इफ दैट टेक्स प्लेस ऑन, इन्होंने क्या डेट दी है, 32 की दी है ना, 32 की दी है। तो यहाँ पे आऊंगा, 33,000 माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। नीलेड बैंड, नो नीलेड बैंड अपॉन द डेथ, तो ये आ गया। नीलेड बैंड एंटायर 3,25,000 अवेलेबल होगा, डेट टैक्स इतना आएगा कि अब मुझे मिलेगा टैपर रिलीफ, ठीक है ना। ध्यान देना, टैपर रिलीफ, क्योंकि मैंने गिफ्ट कब दिया था? मैंने गिफ्ट दिया था April 25 को, मेरी डेथ हुई है April 32, तो 7 साल के अंदर, 7 साल तो हो गए, मुझे लगता है डेफिनेटली मुझे पूरा ही मिलेगा, 100%। सो ये देखो, नेट टैक्स पेएबल 0, ठीक है ना। तो मैं उसकी वाइफ का नाम चिक्ता लिख देता हूँ, डन। सो दिस वाज माय एंटायर कैलकुलेशन ऑफ दिस सम। चलो भाई, फाइनली ये हो गया, ठीक है ना। अभी मुझे एक्चुअली अगर इसका आंसर देखना है, मैं कैसे देखूंगा, रुक जाओ। मैं इधर एक आंसर ऑलरेडी खोला हुआ था। नाइस। मैंने ये लास्ट टाइम जब दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दिया था। अब देखते हैं भाई सैंपल आंसर इनका। काफी सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मुझे बस इस चीज को मैसअप नहीं करना चाहिए अभी यार। एलडीआर वगैरह क्यों आ रहा है? नेट टैक्स सेविंग, ये रहा। नेट टैक्स सेविंग मुझे सबसे पहले आया था 3 लाख, सॉरी 3,044, 3,044, नाइस। पहला क्वेश्चन बराबर है, गुड। Why gift holder release is available in gift of shares? Bevok Limited is an unquoted trading company. Okay, unquoted trading company, इसके लिए वो अवेलेबल है। एंड चिक्ता इज विल बी अ यूके रेसिडेंट। अच्छा, ये दो ही फालतू के रीजंस हैं। ओ, कि बेवॉक लिमिटेड एक तो अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनी, और चिक्ता इज लाइक दिस। अरे भाई, ये जूम में थोड़ा करने का ट्राई करता हूँ। बहुत ही छोटा दिख रहा है ना। हम्म। एंड चिक्ता इज बेसिकली अ यूके रेसिडेंट, इसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। यस, वी आर करेक्ट। ये देखो 1714, ये देखो 16,286 एंड 1714, परफेक्ट है हम लोग उधर भी। ये देखो 1714, 16,286, परफेक्ट है हम लोग।
तो क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज वो 6,000 के नीचे के वैल्यू के हैं। अगर 6,000 के नीचे तो वो चीज चार्जेबल गेन्स ही नहीं है, तो वो चीज चार्जेबल एसेट्स क्यों होगा? मतलब चार्जेबल एसेट्स ही नहीं है तो फिर वो डिनोमिनेटर में क्यों होगा ऐसा? एंड या फिर वो मतलब वो मूवेबल चैटल्स हो सकते हैं इसके लिए। चलो भाई, अच्छा हुआ ये पहले ए और बी तो बहुत सही गए हैं, ए और बी आर करेक्ट। ठीक है, बी का फर्स्ट पार्ट थोड़ा फालतू था कि भाई वो बस यूके रेसिडेंट है और उसका ऑनकोर ट्रेडिंग इसलिए नहीं आ रहा है, वो ठीक है। लेटर ऑन वी कम डाउन टू अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी लीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिफ्ट ऑफ शेयर्स। ओ माय गॉड, बीपीआर, अरे भाई, दे हैव सेड बीपीआर अगर अवेलेबल है। shit, I think I messed that up a little bit. A little bit I messed that up. सी का फर्स्ट पार्ट कहाँ गया? हाँ, मैंने वो वर्ड में किया था, राइट, सॉरी। तो बेसिकली वो बोलना चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ बीपीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिफ्ट। तो अपन ने तो लिखा था कि हाँ भाई, वन कोडेड ट्रेडिंग कंपनी है, परसेंटेज मैटर नहीं करता, 7 साल के अंदर वे बीपीआर विद मुझे लगता है कि अगर डेथ 7 साल के अंदर हो गई तो विड्रॉ हो सकता है, ठीक है ना? स्टिल होल्ड द शेयर आई फील। हाँ, अगर वो होल्ड नहीं करता तो उतने पीरियड के लिए ऐसा है। बट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अमाउंट कैलकुलेट किया बीपीआर की, तुम्हें मतलब बीपीआर कितना अवेलेबल होगा, दैट्स व्हाट दे हैव कैलकुलेट। सो सी, द गिफ्ट ऑफ दिस शेयर्स विल क्वालिफाई फॉर बीपीआर at the rate of 100% because Babcock Limited is an uncoded trading company and Adal will have owned the shares for at least 2 years prior to the gift. However, relief will be restricted to the expected assets. Now, what are expected assets? Assets which have not been used for the purpose of the business in the 2 years prior to the gift which has been। तो वो जो उसका 4,000 था ना, अपन ने जो ऊपर एडजस्टमेंट किया था पता है? अपन ने जो फुल ऐसे आके कि भाई, ये देखो कहाँ गया वो, इसको इसको भी थोड़ा पूरा। हाँ, ये आई कैन एक्चुअली डू दिस ना, माइनस में कर सकता हूँ, मुझे एक्चुअली ये करना चाहिए था पहले माइनस। ठीक है। मैंने ये देखो ऊपर तुम देखोगे तो मैं देखो ये 4,000, ये देखो ये जो था डिफरेंस ना, वाई वॉज दिस डिफरेंस हियर इन द फर्स्ट प्लेस? इट वॉज बिकॉज, ये देखो, शेयर्स इन द कोटेड कंपनी वैल्यूड एट 0.4 हेल्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो बोलना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारे 0.4 है वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए था, नॉट फॉर योर बिजनेस पर्पज। तो तुम्हें बैडर इसके ऊपर नहीं मिलेगा। सो हमें बैडर कैसे कैलकुलेट करना था? आपको जो बीपीआर, ये जो 4,04,000 है, मैं बता देता हूँ, इधर ही बता देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे 4,04,000 का हमारा लेट सपोज ट्रांसफर वैल्यू है, हाँ ठीक है, इसके ऊपर 3,000 3,000 का मिला, वट एवर, ब्ला 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 ब्ला, या अपने को आया। बीबी बीपीआर आई थिंक लेकिन एईए के पहले होता है, तो 4,04,000 ही बनता है, मुझे अब याद आया। एईए के पहले होता है बीपीआर, अभी मुझे इस वैल्यू पे मिलेगा, बराबर है ना? तो क्या वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको बीपीआर जो मिलेगा वो आपके सिर्फ बिजनेस एसेट पे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलेगा। और आपने 4 मिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब पकड़ के चाहिए थे, तो 4.1 डिवाइड बाय 4.5, ये जो रेशियो है, इस रेशियो में आपको बेसिकली आपका बीपीआर मिलेगा। दैट्स व्हाट दे हैव सेड एंड दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट विद इट। आई इट इज completely my fault, I don't blame them. That's completely stupid of me. ठीक है। However, it is also necessary that Cikta owns the share at the date। हाँ, ये देखो, ये मैंने बिल्कुल सही बोला है। However, it is also necessary that Cikta owns the shares at the date of the death, or if not, that she has reinvested the proceeds in the qualifying replacement business property within 3 years of the date of sale. As Cikta will sell the shares on 1st of March 27, further information will therefore be required as to whether और नॉट क्वालिफाइंग रिप्लेसमेंट एसेट इज एक्वायर्ड। तो वो सब इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है? तो डोंट बॉदर, जाने दो। आगे आता है मैक्सिमम पोटेंशियल इनकम टैक्स, ये आईएचटी लाइबिलिटी, इनहेरिटेंस टैक्स लाइबिलिटी। ये देखो, ये हमने बिल्कुल, ये देखो 72,400 मैक्सिमम। उन्हें मैक्सिमम ही मतलब वो पूछा था 72,400। तो मैंने ये देखो ये कैलकुलेट किया था। एक सेकंड ना, इसको थोड़ा कंट्रोल माइनस करना पड़ता है यहाँ पे आने के बाद। हम्म मैंने वो बिल्कुल सही कैलकुलेट किया था। तो ये देखो 72,400 कहाँ गया, ये देखो डेथ टैक्स 72,400। बट बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट वेदर वॉट दे हैव आस्क्ड या कैसे पूछा, तो मैंने नीचे इफ दैट टेक्स प्लेस ऑन 06432 भी कैलकुलेट किया था। तो जिसका मेरे को आंसर ऑब्वियसली नहीं लाया था, बट वो चीज उन्होंने उन्होंने वहां पे नहीं नहीं पूछी थी। बट आई वॉज नॉट श्योर कि उन्होंने क्या पूछा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैंने दोनों कैलकुलेट किया। ए वन वॉज राइट। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है?
आई थिंक दोनों थ्योरी क्वेश्चन ही थे। एक तो बीपीआर में हमने हाफ पार्ट बताया, हाफ का हमें नहीं बताया था, वो हमने नहीं बताया 4.1 डिवाइड बाय 4.5, वो एक गलती। और ये थ्योरी में खाली दो फालतू पॉइंट्स थे कि बेसिकली वो यूके रेसिडेंट है और वो अनकोडेड ट्रेडिंग कंपनी है, बस वही थे। मैंने कुछ भी नहीं बोला था क्या, मैं रोल्ड ओवर एसेट बोला था, रिस्क कॉस्ट मैंने कैसे कैलकुलेट करते वो बताया था। बी का फर्स्ट वन कहाँ गया? ए मैंने वो लिखा है, शेयर्स डू क्वालिफाई फॉर गिफ्ट होल्डर रिलीफ, नाइस। बट नॉट एट आर्म्स लेंथ, वो सब मैंने मतलब वो फालतू में पॉइंट्स लिख दिया आंसर आंसर बड़ा करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल गुड सम, आउट ऑफ नोवेयर ये सम करेक्ट आया, मुझे लगा नहीं था कि ये सम करेक्ट आएगा, क्योंकि मैं जो भी सम अभी ए टैक्स के लिए कर रहा हूँ और मतलब वो रिकॉर्ड वो गलत ही जा रहा था। तो आई वाज लाइक जा रहा, तो मैंने बहुत ज्यादा गाली भी दी इस वीडियो में, सो आई एम जेन्युइनली सॉरी एंड आई होप यू गाइस हैव लर्नड अ लॉट। बाय, थैंक यू।